Good evening, everyone. We are here again with the Assertion and Reason series for Class 12 Chemistry. Today, we are going to discuss chapter Polynomials, and the channel details are right in front of you, and the video link is also there. I am Manisha Sharma from Martyrs School. Without wasting much of the time, the first statement that I have in front of me is branched polymers have higher tensile strength than linear polymers. This statement is absolutely false. Why? Because when the polymers are branched, when we talk about their branching, they cannot have higher tensile strength because of their branching in them. Linear ones have more tensile strength because they are linear. They are not branched or not going anywhere. Reason says the intermolecular force of attraction in linear polymer is more than that in branched polymers. That is absolutely true. So assertion here is false, but reason here is true. Second statement that we have is vulcanization of rubber increases its tensile strength. Now, when you have, suppose this is a rubber strand, this is another rubber strand. Vulcanization is nothing but bonding of these two rubber strands with sulfur. That's called vulcanization of rubber. And it increases tensile strength, it believes. So it is true. And sulfur crosslinks are formed between polyisoprene chains during vulcanization. That is also true. So here assertion is also true, reason is also true, and reason is explaining the assertion well. Third statement that we have is PHPV. PHPV is used for making orthopedic devices. PHPV is a biodegradable polymer. It is a very, good quality of polymer. And reason it says that PHPV is a biodegradable polymer. So here assertion is also true. Reason is also true, and reason is explaining the assertion well. And why is it used for orthopedic devices? Because it should not harm your body. So something which is used inside your body should be somewhere non or harmless to your body. Fourth statement that we have is HDP, that is high density polythene, has lesser flexibility than LDP, that is low density polythene. ना HDP और LDP का मैं अगर आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँ तो जो पॉलिथीन बैग्स आपको वो सब्जी वाले से मिलते हैं पतले वाले जरा सा भी आप उसमें पिन लगा देते हैं या उंगली से भी करते हैं तो वो बहुत इजीली फट जाते हैं एंड देन यू गेट दोज गुड क्वालिटी पॉलिथीन्स जिसको आप सिजर्स के बिना नहीं कट कर सकते आई एम श्योर अभी आप लोग के घरों में बहुत सारे कुरियर पैकेट्स आ रहे होंगे दोज व्हाइट कलर बैग्स अंदर से ब्लैक होता है ऊपर से व्हाइट होता है और उसको आपको फिर सिजर से फाड़ना पड़ता है या आपको बहुत ताकत लगा के उसको फाड़ना पड़ता है सो HDP has lesser flexibility than LDP. That is absolutely true क्योंकि less flexible होता है तो इसलिए वो ज्यादा स्टफ होता है और स्टबर्न होता है तो बहुत इजीली वो काम नहीं कर सकता एंड LDP हैज मोर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देन HDP क्योंकि ज्यादा ब्रांचेस होने से क्या हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गई टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने से क्या हो गया आप इजीली उसे ब्रेक कर सकते हैं सो assertion is true and reason is very well explaining the assertion well. Fifth statement that we have is natural rubber is very elastic in nature. This is true. This is true because natural rubber, अगर आप देखें तो rubber plants होते हैं. I don't know if you have seen, but rubber plants, if you just take the leaf and pluck it, you will see that gummy kind of thing. And if it sticks on your hand, you can see those strands coming out. So natural rubber is elastic in nature. Reason says the coil structure of cis polyisoprene is held together by van der Waals forces, which is true. What happens? Natural rubber is very soft, very elastic. Now, at times we need, some rubber things which should not be that elastic in nature. Like, अगर मैं आपको कहूँ कि टायर्स बनाने हैं और आप नेचुरल रबर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा टायर तो नहीं बन सकता बिकॉज वो इतना इलास्टिक और इतना सॉफ्ट होगा कि वो व्हीकल का भी वेट नहीं ले सकता और व्हीकल में बैठे लोगों का तो ले ही नहीं सकता सो इन ऑर्डर टू गेट इट तो हमें इसको सिंथेसाइज करना पड़ता है सिंथेटिक रबर बनाना पड़ता है इलास्टिक इसलिए होता है बिकॉज उसमें ऐसे वेंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से वो उसका टेक्सचर या उसका जो स्टिफनेस है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती है सो असर्शन हियर इज ट्रू एंड रीजन आल्सो इज ट्रू एंड इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन वेल Sixth statement is benzoyl peroxide is necessary for free radical polymerization, which is absolutely true. ये चीज हमने क्लास 11 में भी करी है और क्लास 12 में भी तो दिस चैप्टर वाज नॉट टॉट टू द प्रेजेंट बैच जो कल ही क्वालिफाई हुए हैं बट द current 12th class batch 2021-22 will have to study this chapter. So benzoyl peroxide is very much important, very necessary because जो उसमें अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा सकूं it is C6 sorry
C6H5 COOC C6H5। तो ये जो आपका एक और O आ गया यहाँ पे, और ये जो फ्री रेडिकल, अगर मैं इसको यहाँ ना दिखा के ऐसे दिखाती हूँ, तो ये ब्रेक करता है, और ब्रेक करके ये फ्री रेडिकल बनाता है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए बेंजोल पेरोक्साइड हमारे लिए बहुत जरूरी है। Now peroxide gives the necessary free radicals required for initiating the process. That is also true. So assertion is also true, reason is also true, and it is explaining the assertion well. Seventh statement that we have is the polymer, sorry. The polymer obtained by condensation polymerization will have a lower mass than the total mass of the monomers undergoing polymerization. That is true. Why is it so? Because you have a monomer, you have another monomer. When one monomer combines with another monomer in condensation, there is always a loss of molecule happening. वो molecule water हो सकता है, वो carbon dioxide हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब दो monomers condensation करते हैं, तो उनमें एक particular molecule is going to be lost. Since the molecule is being lost, of course, the mass of that molecule has to be subtracted. So the monomers that you are using, suppose you have used 5 monomers, the mass is going to be less than this 5 monomers mass. The reason says the process of condensation polymerization takes in separate individual steps. This is also true, but somewhere this is not explaining the assertion well. Basically, it has to tell here that the process of condensation polymerization involves the removal of certain molecules like water or carbon dioxide, because of which mass is lower. So we go with the option B. Eighth statement that we have is the monomers in addition polymerization are unsaturated. Majorly, we would say that yes, they are unsaturated, because that's why addition is happening. क्योंकि उनमें double bonds या triple bonds होते हैं, और वो double bond triple bond को हम break करते हैं ताकि हम further दूसरे monomer को combine कर सकें. Reason says addition polymerization takes place the cleaving of pi bonds. Just like I said, suppose अगर आप ethene की बात करते हैं ना, there is one ethene, CH2 double bond CH2. आपने इसको एक और CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ कंबाइन किया, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ एंड छोड़ देगा. तो बेसिकली यू गेट CH2 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 एंड सो ऑन, राइट. सो क्या हो रहा है, आपका अनसैचुरेशन जो कंपाउंड में है उसकी वजह से ही तो आपकी चेन आगे फर्दर बन रही है. सो असर्शन इज आल्सो ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू, एंड दे आर वेरी वेल एक्सप्लेनिंग ईच अदर. Ninth statement that we have is rayon is a semi-synthetic polymer. Yes, it is true, because हम rayon को बहुत natural polymer नहीं कह सकते, synthetic भी नहीं कह सकते, because हम उसको flax से बनाते हैं, so वो semi-synthetically prepare होता है. Rayon is prepared wool, which is a natural polymer. This is wrong. It is not prepared from wool. It is prepared from flax होता है, उससे हम उसे बनाते हैं. So assertion is true, but reason is false. 10th statement that we have is thermosetting polymers cannot be reused after strong heating. This is true. Thermoset का मतलब ये है कि वो आपने heat दिया, polymer set हो गया. Thermoplastics are the ones जिनको आप थोड़ा सा भी heat करेंगे तो वो reshape हो सकते हैं. जैसे अगर मैं आपको ये bottle दिखाऊं, तो ये भी thermosetting है, but इससे थोड़ी lower quality bottle अगर आप लेंगे तो आप उसको heat करेंगे तो वहां से ना उसकी shape खराब हो जाती है, फिर आप उसको थोड़ा सा और करेंगे तो वो वापस उस shape में आ जाता है. But majorly the polymers that you see around are thermosetting polymers. I'm sure आप लोग को अपने घर के किचन में मम्मी के पास कुछ ऐसे नाइफ हैंडल्स मिल जाएंगे, चाकू का जो हैंडल होता है, या जो भी आप कड़छी वगैरह यूज करते हैं उसका हैंडल होता है, तो वो कभी कभी मम्मी से गलती से गैस के ऊपर रह जाता है, चूल्हे के ऊपर रह जाता है, तो वो जल जाता है और वहीं से वो डिफॉर्म हो जाता है. That's because it is a thermosetting polymer. So you can't, reuse it, or you can't reshape it once it is heated. And thermosetting polymers have a heavily cross-linked structure. That is also true. But वो reuse क्यों नहीं हो सकता, उसको ये explain नहीं कर पा रहा. Basically reason ये होना चाहिए था that thermosetting polymers have a heavy cross-linked structure which on heating gets clumsy or gets interconnected to each other, because of which the polymer shape gets affected. So somewhere that is not explained properly. So assertion and reason both are true in their own ways, but they are not explaining each other. So we go by the option B. That's all from my side for this chapter. These are the chapter and the channel details. Please do like, follow, and subscribe to the channel. Thank you for watching 1 Mark Solution.